इंडिया के प्रोटेक्टेड एरियाज एक लेयर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे काम करते हैं। नेशनल पार्क्स में सबसे स्ट्रिक्ट रूल्स, ग्रेजिंग, प्राइवेट राइट्स अलाउड नहीं होते। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज थोड़ी फ्लेक्सिबल, रेगुलेटेड ग्रेजिंग अलाउड। बायोस्फीयर रिजर्व्स एक बड़ा लैंडस्केप होता है जिसमें कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन्स होते हैं। टाइगर रिजर्व्स रन होते हैं अंडर द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के ब्रॉडर रूल्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और रेस्टोरेशन के लिए कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 प्रोवाइड करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस PYQs। सबसे कंफ्यूजिंग वाले। Which protected area type uses a zonation system consisting of core zone, buffer zone and transition zone? A. National Park. B. Wildlife Sanctuary. C. Biosphere Reserve. D. Tiger Reserve. Answer C. Biosphere Reserve. Only biosphere reserves follow UNESCO's 3-zone model to balance conservation and development. In which protected area is all grazing activity fully prohibited by law? A. Wildlife Sanctuary. B. Biosphere Reserve. C. National Park. D. Tiger Reserve. Answer C. National Park. National parks allow no grazing and no private rights. Strictest category of protection. Tiger reserves in India are legally governed under which legislation? A. Environment Protection Act 1986. B. Wildlife Protection Act 1972. C. Forest Act 1927. D. Biological Diversity Act 2002. Answer B. Wildlife Protection Act 1972. Tiger reserves are declared under the Wildlife Protection Act and monitored by NTCA. Compensatory Afforestation Fund is created mainly for which purpose? A. Ecotourism development. B. Afforestation and forest regeneration. C. Wildlife tourism promotion. D. Industrial green certification. Answer B. Afforestation and forest regeneration. Campa funds restore forests lost due to land diversion. Diversion of forest land for non-forest use is regulated under which act? A. Wildlife Protection Act. B. Forest Conservation Act 1980. C. Environment Protection Act. D. Coastal Regulation Zone Rules. Answer B. Forest Conservation Act 1980. FCA makes central government approval mandatory before using forest land for non-forest purposes. For more environment and ecology PYQs, log in to Uki and search PYQs. Your entire UPSC practice is just one search away.